Unveils, we are a social enterprise and we have been working on strengthening women's leadership and participation in the economy. And we have been working in this very interesting initiative with support from US Consulate Kolkata for around 2 years. And we are having these sessions. Some of them are live sessions, some of them are pre-recorded, some of them are Facebook Live. And in these sessions, we try to bring experts from different domains who touch upon different topic and try to address queries or difficulties that women entrepreneurs are facing. So here, women entrepreneurs mean we are primarily focusing on first generation women-led businesses who have started their business or maybe 3 years or 4 years down the line. And they are facing trouble with regard to how to grow their business, how to scale up their business. And when we were meeting these women entrepreneurs in Guwahati, Dimapur, and even in Shiliguri and some in Kolkata, we realized that many of these women entrepreneurs have queries with regard to how to complete or file taxes, statutory compliance related questions, then formalization of business. Many of them are not quite aware of what are the different types of companies and which registration to which kind of company would help them in nurturing their business and would help them in gaining more tractions, etc. So they are in a very cloudy situation with regard to understanding these legalities, because many of these entrepreneurs are coming from different backgrounds. So it's not mandatory that they are coming from an accounts background or a mathematics or science background or technology background. So many of these entrepreneurs are from have done their masters in social sciences. They have this beautiful idea of starting a business, but they don't have that understanding of numbers. In business, be it entrepreneurship, be it startup, whatever keywords we use, number is the key, right? So they are not quite aware as to how to deal with numbers, number one. Number two is these legalities. Many of them are absolutely very confused with it. That is why we are here with CA Sanjay Goyal, who is currently the chairman of ICC North Bengal. He is a chartered accountant with 20 plus years of experience working at MS Anand Sanjay and Associates. He is also the founder of GFS Realtors and co-founder of Work Nests and Mangal Shiva. So he has been working in different business organizations. He has started many enterprises himself, and we met him in Shiliguri, and then he gave us this wonderful key points or pointers or takeaways which these entrepreneurs can think about with regard to formalization of business. So that is why we thought of bringing Sir on one of these sessions. We are calling these sessions as Training Tuesdays, because on Tuesdays we are having these sessions on building the particular knowledge or skill or information that many of the entrepreneurs are lacking. So thank you. We welcome you, sir, in this session and in our initiative. Thank you so much. And we have with us my senior colleague, Mr. Jamil Akhtar, who has almost 28 years of more than that experience in sales and marketing. And Jamilda is instrumental in guiding many of these entrepreneurs with whom we are working right now. And he is our resident mentor, you can say. And over to you, Jamilda. So Jamilda will be giving a brief on the questions which Sanjay sir can address. So thank you, Arina, for setting the context. I'll keep it brief and allow Mr. Goyal to actually talk about some of the things that we wanted to discuss. Just to put things into perspective, there's a new wave of entrepreneurship in India especially in the last 10 years. And there are many reasons for this. On one hand, there is lack of opportunities in terms of jobs in the private sector and also in the government sector. But at the same time,
we see a lot of opportunities because of the new thing that has been created, which is about getting informations, access to technology, new e-commerce and digital or digital commerce, and there is a ecosystem that is getting developed um, for collaboration, and that is helping this new trend of entrepreneurships. Now, we see a lot of big cities, big ideas now becoming unicorns. They are getting listed. So all those things are happening. So we are not talking about those. Those are something to showcase for the government. But here we have a network of women entrepreneurs who are from the small cities. They have come from different background, as Orina has just told. Not everybody is already successful. They have just started their business. Many of them at the early stage, many of them are in the idea stage, many of them have already started getting tractions, and most of them are bootstraps, more or less. They fund their own business, and they are facing many challenges, whether it is developing new products, new product lines, marketing their products, getting access to markets. But apart from that, there is one more challenge, which is currently being ignored by many of them, what we understand while interacting with them, is what they consider is a very dry and difficult subject to latch on and understand, is about various statutory norms and the compliance related things. um, if you see, most of them will start with a proprietorship business, with a bank account, and they will start. They are, because they are in the early stage. Some of them have got that vision, and perhaps those actually they do not need our help. They already know what to do. They are already well trained. They have got certain mentoring from beginning. They have already formed the private limited company. They have a vision. They have already raised money, etc. So we are not talking about that. But 90% of those who are actually these starting very small. Okay. So here is my first question to you, Mr. Goyal. While starting, since I have just told you that most of them will start with a proprietorship firm, what are the other options that they have, and what are the pros and cons of various, constitutional forms like proprietorship, partnerships? Then, like, we have got something called LLP and also private limited. Okay, so many people suggest that if you really want to scale up big, then you should have a private limited company. And if you want to do a partnership firm, then there has, your exit clause, etc., must be must be clearly defined, so that you do not have any issue later. So if you can demystify this whole thing, that at an early stage what should be the right kind of constituent of the firm, and is there any way they can change it to other forms, and how they should go about it? If you can talk about that, that will be my first questions. Well, thank you, Jamilda. And at the outset, I think I'd like to thank Contact Base for giving me this opportunity to be with you all. ये एक अच्छा मौका मुझे मिला है कि मैं आप लोगों के साथ आऊँ और शेयर करूँ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का भी मौका है Right. to the good work that you all have been doing. Let me congratulate you for empowering women entrepreneurship in Eastern India most of the part. I think this will go a long way in ensuring that we see a real entrepreneurship boom coming to the East India also, with all this effort that you are putting in. Now, coming to the question of Jamilda regarding the formulation. जब भी हम formulation की सोचते हैं, तो the easiest and मतलब most acceptable way at the very beginning is कि भाई अपने नाम से करना है, अपना business है, तो चलो एक proprietorship form कर लेते हैं. तो पैन कार्ड अप्लाई किया प्रोप्राइटरशिप अपने नाम से, और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म किया बाय एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड लाइसेंस, तो बिजनेस चालू कर देते. 2 और 3 लोग होते हैं तो जनरली वो लोग चाहते हैं कि चलो एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लें, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं होता है, दोनों की राइट्स रहती है, तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म करके फॉर्म कर लेना रहता है. बट अगर जैसे कि आपका विजन पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना है. अगर आपका विजन और स्केल ऑफ द बिजनेस इज बिग, इफ यू आर लुकिंग इन फ्यूचर टू ब्रिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट इनटू योर फर्म, देन जब भी कोई इन्वेस्टर्स आएंगे ना, वो लोग ये देखना चाहेंगे कि कंट्रोल आपके बिजनेस पे सिर्फ आपका ही है, या कंट्रोल भी आप शेयर करने के लिए विली हैं, राइट्स भी आप शेयर करने के लिए विली हैं. बोर्ड में अब आप अगर प्रोप्राइटर हैं,
तो अगर कोई बाहर से इन्वेस्टर आना चाहेगा तो जो बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड आप ही हैं, बोला कभी बोर्ड में नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, आने वाले दिनों में आपको आगे लेके जाना है, then the best thing is to form a private limited company. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप फॉर्म करते हैं ना, तो उसमें शेयर होल्डर्स रहते हैं। शेयर होल्डर्स, आप चाहो तो अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट लेने हैं तो कुछ शेयर्स आप अपने लिक्विडेट कर सकते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट, या फर्दर शेयर्स रेज करके आप लोगों के इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। तो फंडिंग को लाने के लिए अगर उस तरह का आपका विजन है, स्केल अप करना है फ्यूचर में, तो आपको शुरू से इसी तरह जाना चाहेगा। क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रहती है ना, वो एक पब्लिक डोमेन में रहती है, तो उसके कंप्लायंसेस, उसकी चेकिंग, उसकी ड्यू डिलीजेंस करना हर थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है अगर वो एंट्री करना चाहता है। ये मैंने आपको स्ट्रेट अवे बता दिया थोड़ा अपर लेवल की चीज, कि अगर आपको फंडिंग बहुत ज्यादा स्केल अप करना है। लेकिन जब आप छोटा बिजनेस चालू करते हैं ना, तो आप सबसे पहले आपके माइंड पे ये रहता है बिजनेस 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 बिजनेस, कैसे करना है, क्या करना है। तो उस टाइम आप इतना ज्यादा सोचते नहीं है, तो बेसिकली आप स्टार्ट कर लेते हैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म। तो आपके माइंड पे ये भी रहना चाहिए कि आप एक पार्टनरशिप फर्म को भी फ्यूचर में एक प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी भी कर सकते हैं। एलएलपी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फॉर्मुलेशन होता है ये। इसके भी कंप्लायंसेस थोड़े ज्यादा हैं। अब आप सोचेंगे कि मेजर डिफरेंसेस क्या है, तो मैं डिफरेंसेस को दो तरह से डिफाइन करना चाहूंगा। वन इज द टैक्स स्ट्रक्चर, अनदर इज द कंप्लायंस स्ट्रक्चर। अब सपोज आप एक नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप फर्म फॉर्म करते हैं, तो आपका एक टैक्स स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। आपको एक स्पेशल लिमिट मिलती है, 5 लाख रुपए की इनकम तक आपको ये टैक्स देने की सरकार है। उसके बाद स्लैब्स है, स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना है। पहले आप 10% में आओगे, फिर 20% में आओगे, फिर 30% में आओगे। अब उसके बजाय अगर आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हो, तो देर इज अ सिंगल रेट ऑफ 30%। इफ यू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन द टैक्स रेट्स आर 25%। एंड आपको न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 17.5% की भी रेट है, बट जनरली इट इज 25% फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये हो गया टैक्स स्ट्रक्चर। अगर आपका बिजनेस, आप मानो मुझे कि बहुत ज्यादा स्केल अप का नहीं है, बहुत ज्यादा आपका अभी इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा आपका विजन नहीं है, लेकिन आप छोटे तरह से करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज गो इन विद पार्टनरशिप नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब रह गया कंप्लायंसेस। बेसिक कंप्लायंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज द मिनिमल। पार्टनरशिप फर्म अगर आप फॉर्म करेंगे तो कंप्लायंसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। एलएलपी करेंगे तो कंप्लायंसेस थोड़े और बढ़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल बी समवेयर सिमिलर टू एन एलएलपी। तो वहाँ कंप्लायंसेस हैं, उसमें आपको नॉलेज भी चाहिए थोड़ा बहुत, या फिर आप एक कंसल्टेंट रखेंगे, और थोड़ा कॉस्ट भी है। तो ये सारा चीज डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का स्केल क्या है, या आपका बिजनेस का विजन क्या है। तो स्केल और विजन के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे हमेशा कि आपने को एक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है। Thank you. I think you have explained it so lucidly. If I can summarize for my own understanding, for everyone's understanding, is that it all depends what is your vision. If your vision is to becoming big, take it to the stock market, or at least to then nationally or regionally, and you will require a lot of money, then private propertyship or partnership will not work. Private limited company has to be formed, so that you can, because the investor will look for two things. One is that they can be part of your organization, they can also have control. So unless you make it a private limited company, you will not be able to do that. But if you have a Right. very limited vision, and you want to operate within your district, within your state, without much of if you want to remain within your comfort zone, then I think proprietorship will be a good one to start with. But as you have told, that later on, partnership firms can be also, converted into a private limited company if you want to change it, right? Right. So in terms of tax structure, what you have just said is that uh, as far as proprietorship firm is concerned, the tax structure is more or less in line with the normal individuals tax structure, Absolutely. right? Absolutely. And in terms of compliance, obviously the compliance requirement will go up as we, as we go from proprietorship to partnership, from there to LLP and private limited.
So this is Absolutely. what I understood. Right. I think that part is absolutely clear. So the second point is that I want to ask you is that we often face, while interacting with these micro entrepreneurs, and many of them mm, are in the early stage, is about their about bookkeepings. Uh, and primarily there are two reasons why they are not very, they consider it as a very absolute dry subject. It's an accounting subject, a lot of mathematics, a lot of calculation is required. They do not understand the jargons. um, they initially ignored this. For another reason is that मेरा तो बिजनेस छोटा है, अभी जब होगा तब देखेंगे, 20 लाख तक तो ये नहीं लगता है, क्या जरूरत है, अभी तो प्रॉफिट भी नहीं होना है. So those are some of the things that that they use, and ignore the bookkeeping. Another thing is that is difficult. Maybe I'll have to hire somebody. I don't understand. I come from social science background. So those are some of the things that comes. But without understanding this, and without keeping the book in a professional manner, they'll be missing out a lot of things, in terms of their cost structures, in terms of their revenue streams, in terms of their debtors, creditors, what kind of working capital that they require. So unless they have all those informations, unless they analyze those information, they'll not be able to take informed decisions about what is bothering them, what kind of contribution margin that they are making, etc. So all those things will be very, very important. So how do they should go about it, and what is your suggestion to how they can keep their books? Is there any technology, is there any assistance, without investing much, if they can take help? If you can tell us about that. Because for the more organized player, we have seen, they use tally, and all those things are there. So they have got all those companies who are providing those software, etc. And bigger companies, multinational, they use ERPs, etc. Every information from payroll to your material movement, everything is tracked. But here that is not the case, and it is typically an one man army or two man army, uh, or rather two human army, or rather I would say. So please help us with that. See, if you're getting into business, business is all about money. Business is all about money flowing in, money flowing out. And bookkeeping, accounting is an integral part of your business. We always tell all entrepreneurs that ना कि आपको और अपने डोमेन की, अपने प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज है ना, उतना ही थोड़ा सा नॉलेज आपको बुककीपिंग अकाउंटिंग की होनी बहुत जरूरी है. बिकॉज आपको अगर बुककीपिंग अकाउंटिंग की नॉलेज है ना, तो आप मच बेटर प्लानिंग कर पाएंगे. आप एक थर्ड पर्सन को रिक्रूट करेंगे तो क्या होता है कि उसको आपको बताना पड़ेगा, वो समझेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा. लेकिन डे टू डे एक्टिविटी देखिए आप कर रहे हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. अब देखिए, अब बिजनेस स्केल पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस स्केल कैसा है. आपका स्केल कम है, देखिए आप लाइफ जैकेट के बिना ना छोटा सा स्विमिंग पूल में कूद सकते हैं, आप डूबोगे नहीं. लेकिन आप लाइफ जैकेट के बिना ना समुंदर में नहीं कूद सकते. अकाउंटिंग वैसा ही सब्जेक्ट है. अकाउंटिंग नॉलेज के बिना आप छोटा सा बिजनेस, छोटा सा तो आप कर सकोगे विदाउट हेल्प. लेकिन अगर आपका बिजनेस बढ़ गया ना, तो आप ये मान लो कि आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है विदाउट अकाउंटिंग नॉलेज टू बी, और यू आर कीपिंग एन एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग कि आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए. अब रह गया कि आप कैसे करोगे. मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि खुद नॉलेज थोड़ा बहुत, अगर छोटे स्टेज में हो तो थोड़ा बहुत नॉलेज खुद ले लो. बच्चे भी तो 11-12 में अकाउंट पढ़ते हैं. आप तो एंटरप्रेन्योर हो गए, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ के इंप्लीमेंट कर पाओगे. सॉफ्टवेयर बहुत है, इन्यूमरेबल है. सम आर वेरी पॉपुलर, सम आर नॉट वेरी पॉपुलर. आप बेसिक एक्सेल में ही करना, एक्सेल तो सबको आता है. आप क्या रिसीव कर रहे हो, क्या पेमेंट्स कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, उसको तो आप लाइन आइटम के हिसाब से एंट्री करके आप आराम से मैनेज कर सकते हो. उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन जो करना है ना, बिलीव मी, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना, आप आराम से सीख जाओगे. नहीं तो हेल्प लीजिए. आप फ्रेंड कोई अकाउंट्स में नॉलेजेबल होगा, आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड होगा, कोई उससे थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए और सीख लीजिए. अगर आपका स्केल छोटा है तो, क्योंकि आप कॉस्ट नहीं, अभी के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाता है, अकाउंटेंट नहीं मिलता है बाजार में. अभी ऐसा सिचुएशन है कि अकाउंटेंट्स आर इन रियल स्कैर्स.
द कॉस्ट इज वेरी हाई। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक एक्सटर्नल अकाउंटेंट को बुला के 10, 15, 20 हजार रुपया महीने देने का फॉर स्मॉल एंट्रीज एंड ऑल विच यू कैन डू ऑन योर ओन। कोशिश करिए इसको सीखने का, ज्यादा टफ नहीं है। आप बिजनेस में जानते हैं, आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट आएगा, वही चीज आपको लिखना है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अगर सपोज एक छोटा सा कोई सपोज आप मोमो ही बना रहे हैं, तो आपको पता है ना कि आप मोमो बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वो आपका कॉस्ट है। बना हुआ मोमो बेच रहे हैं, वो आपका सेल्स है। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, स्टाफ लग रहा है, वो खर्चे हैं। तो आप अपने कैलकुलेट तो कर रहे हो ना, मैं कितना रुपया कमा रहा हूँ। वो कितना रुपया कमा रहे हैं जो आपके माइंड पे है, उसको ही पेन एंड पेपर में डालना है। उससे ज्यादा अकाउंटिंग कोई चैलेंज नहीं है फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर, जिनको जीएसटी में कंप्लायंस नहीं करना, 40 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है, सर्विसेज में 20 लाख के ऊपर टर्नओवर नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा कोई उसमें ऑडिट्स में नहीं जाना है, टर्नओवर उस तरीके से नहीं है, बेसिक अकाउंटिंग करनी है तो भी बहुत आराम से चलेगा आपका। ये तो एक पार्ट हो गया छोटे एंटरप्रेन्योर्स की। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पे हैं जो कॉस्ट, जो आपने वर्ड यूज किया कि डिफाइंड इट कॉस्टली द कंप्लायंस, उनके लिए तो मैंने बताया। अब आ जाते हैं उस तरह के एंटरप्रेन्योर्स जो एक मिड लेवल पे पहुंच गए हैं। मिड लेवल के पहुंच गए मतलब आप डीप वाले स्विमिंग पूल में पहुंच गए हैं। आपको लाइफ जैकेट या स्विमिंग चाहिए, या तो आपको खुद को स्विमिंग आना पड़ेगा, आप अपना अकाउंटिंग करो इन न्यूमरस पैकेजेस दैट, या आप लाइफ जैकेट लो। लाइफ जैकेट इन द मीन यू टेक द सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलिस्ट, you take the services of an accountant, or you take the services of any accounting firm who will help you do the accounting, make a proper presentation। because इसमें दो चीजें हो जाती है। एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए नॉर्मल छोटे छोटे अकाउंट्स करना इजी है, एक मिड लेवल एंटरप्रेन्योर के लिए वो अपना बिजनेस देखेगा या अकाउंटिंग देखेगा। वो नॉलेज तो रख लेगा, उसको पता है क्या गलत है क्या सही है, वो गाइड कर देगा, प्रॉपर देख पाएगा प्रॉपर हो रहा है, बट वो डे टू डे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपना बिजनेस करेगा कि अकाउंटिंग करेगा। तो देयर ही नीड्स सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलिस्ट। लेकिन वो मिड लेवल पे है तो वो अफोर्ड कर सकता है, वो कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो, वो कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है ऑफ एन अकाउंटिंग ऑल्सो। तो वहां आपको जैसे ही आपके स्केल अप हो जाएगा ना, आपको इन चीजों पे रुकना नहीं है। या तो आप खुद बढ़िया तरीके से सीख जाओ, या फिर आप स्पेशलिस्ट का ले लो। whoever is the specialist, maybe a family member, maybe a known person, or maybe an external one, आप उनका ले लो। और जब आप बहुत बड़े बन गए, मतलब जब आप समुंदर में पहुंच गए, तब तो आपको अकाउंटिंग पूरा एक सेक्शन चाहिए आपके मतलब बिजनेस में। आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे लोग फुल टाइम, जो आपके डे टू डे अकाउंटिंग, जीएसटी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पी टैक्स, जितने भी तरह के कंप्लायंसेस हैं, सपोज आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एमसीए की कंप्लायंसेस, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट करवाना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उसके लिए आपको अपनी इन हाउस एक टीम रखनी पड़ेगी। सो अगेन इट टोटली डिपेंड्स on what scale you are operating on, what level you are operating on, what is the cost you are ready to bear. But taking everything into consideration, basic knowledge of accounting for every entrepreneur is very, very, very important. Second, as you scale up, taking this very seriously is also important. I have seen people who have very good turnover, not serious with accounting, getting into a number of problems. टर्नओवर बढ़ गया, पता ही नहीं है टर्नओवर बढ़ गया, पता ही नहीं है जीएसटी की लायबिलिटी आ गई। जब नोटिस आए तो लाखों लाखों रुपए के जीएसटी कैसे देने पड़े। किस लेवल पे आपका जीएसटी का लायबिलिटी आना चालू करेगा, किस लेवल में अपना पीएफ का लायबिलिटी आना चालू करेगा, किस लेवल में पी टैक्स का ये बेसिक चीजें हैं। आप ना आज के दिन नेट पे भी अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप इस पे थोड़ा थोड़ा लर्न कर पाओगे। तो दैट्स और रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, जैसे सर बोले, जमीलदा बोले, देखिए सॉफ्टवेयर बहुत है, कुछ का नाम मैं तो नाम ऐसे यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ, बट कुछ बहुत पॉपुलर है, कुछ नॉट सो वेरी पॉपुलर है। जब आप बहुत वेरी पॉपुलर पे जाओगे तो वो एनुअल आपसे सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो देन यू कैन वेट टिल द टाइम यू आर एट अ पर्टिकुलर स्केल टू स्टार्ट टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ दोस पॉपुलर आर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टिल देन फॉर स्टार्टिंग, एज आई सेड, नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी आप स्टार्ट कर सकते। Oh, I think this is really very useful the way you have explained. तो
जो मुझे समझ में आ रहा है, especially the entrepreneur that we have, those who are at early stage, have very minimum turnover, and in the next 2-3 years, they are not going to exceed those limits of GSTs and other things. I think what you are saying is that um, go through self-learning, understand some of the basic things. That's very, very critical, and you can do it. It is going to help you in planning your business. Okay. Absolutely. I think this is very, very critical that he has written, and Mm. there it is available. There are a lot of good videos, good good models. One can learn from the net. Even there are various beautiful academy like Udemy, etc. They also teach us on all those things. We need to Mm. invest on some of those things so that we do not fall into some kind of trap, some kind of issues later on. Uh, Yeah, absolutely. because there is a chance of running into some kind of risk, which Mm. will not only going to be costly in terms of money, but also be costly in terms of your reputation, etc. So I think Absolutely. as an ethical businessman or business person, it is going to spoil your image also. I think Absolutely. that's why it's very, very important that do little bit of self learning at the beginning, get the basics, put everything on Excel, and from there you derive what are the revenues that you have made, what is your cost structure, on what is where you are spending most of the money, which are the high cost elements, etc. And all those things you can analyze. If you are an entrepreneur, if you want to do business, you'll have to learn this. There is no other way out. That's what Mr. Goyal is saying. Absolutely. So it's better we learn this, and once we scale it up, at the mid level or the high level, and there is no running away from this fact. We'll have to have professional. We'll have to have very professional set of systems and processes so that your business is compliant. So thank you very much, Mr. Goel, on this. Uh, my second question, third question rather, is linked to this only. It is about these GSTs, the goods and service tax. Now, obviously, I also have a small entrepreneurial venture, and we also initially thought, हमारा भी turnover ज़्यादा है नहीं, अभी तो छोड़ दो, GST नहीं चाहिए. Then later on, after 3-4 years of successfully running that business, we realized that now we should go for a GST. सो इनिशियली दैट अभी एक हवा बन गया है जीएसटी का, ऑब्वियसली because of the initial glitches and all those changes that happened, that created a narrative that in GST is very, very difficult to follow. Mm. Uh, Mm. um, uh, Now, at the same time, people can avoid because they are the early stage. They don't require to have GSTs. That is true in one part because there are certain limit. Only beyond that you need GST. But at the same time, most of our entrepreneurs who are trying to sell their products, the kind of different products that they sell, they are trying to sell through the online platforms. Okay. Now, most of the online platforms like Amazon, Flipkarts, and all others, they will not take you on board unless you have GST. Doesn't matter what is your turnover. Okay. Now, so it's a double-edged sword for them. They think that my turnover is not big. Why should I go for the GST and compliance and all those things? But at the same time, through the conventional channel, they will not be able to sell because they do not have that muscle capabilities of a Nestle's or Hindustan Liver or any other company to set up distribution channels like a conventional mode in the conventional mode. So they'll have to go for the e-commerce kind of things. Will have to be part of those platforms. There, it is mandatory to have GSTs. Some of them, at least now, more or less 90% they want GSTs. Now, so what is the best? What is your advice? In fact, I don't have any advice for them. Um, if they really want to make it big, if they really want to get customers, want to scale up their revenue, they'll have to have GSTs. Then how they can go around these entire GST things? If you can help us. I think mostly you answered the question only. See, what happens now? There are two things. One is mandatory, one is optional. Whenever we are talking about GST registration, the law has made some things and whereby if you can complete a particular threshold,
or you are going for online, you have to register yourself. When the question of have to comes into place, you have no other option. You will have to register. See, the cost of compliance in today's world is less than the cost of non-compliance. In today's world, if you're non-compliant, the interest, penalty, they are very, very high compared to your cost of compliance. See, again, I'll tell, if you're a small entrepreneur, and you don't fall in your threshold, suppose your turnover is below 40 lakhs, you're not required to register yourself in the GST. If you are into some manufacturing or supply of goods, not into services. If you're into services, then the threshold limit is 20 lakhs for a place like us. Some of the northeast states, some of the states, it is 20 lakhs for the products, goods, and 10 lakhs for the service. Suppose you're not falling under the threshold, so you're not required to register yourself. Forget about it. Now, suppose your turnover crosses the threshold. You have got no option but to register yourself. Again, once you register yourself, your accounting comes into play and your compliances in terms of filing the return. Suppose your turnover is less than 5 crores, you can opt for quarterly filing of your return instead of filing it monthly. Then you have to file an annual return as well. Regarding your online, where you're working through your operators, Amazon, Flipkart, and all, in those cases, is now it has become more or less mandatory for yourself to register. Without your being registered, they would not do business with you. So now, if it is mandatory, you have a product which sells there. तो आपको ये समझना है आपको बिजनेस करना है या कंप्लायंस से भागना है. आप तो बिजनेस में आए हैं तो आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो कंप्लायंस करना है. अब इस चीज से आप भाग नहीं सकते. आपको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, आप बोलोगे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं रॉ मटेरियल लूं या नहीं लूं. अरे तो रॉ मटेरियल नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे? तो अब तो आपको कंप्लायंस करना है और माल बेचना है, नहीं तो आप कैसे बेचोगे? आप बेच नहीं पा रहे ना, वो आपका माल नहीं लेगा. और आप प्रोडक्ट बना के करोगे कि आप स्केल अप कैसे करोगे? आप बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है. पूरा साल का जीएसटी का कंप्लायंस इस तरह का आप रजिस्टर करके कंप्लायंस भी करेंगे, पूरा साल का 10-20 हजार रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है. वो भी मैं आपको बोलूंगा आप सीखो. अगर आपका स्केल बहुत ज्यादा नहीं है तो आप सीखो. आपको हेल्प चाहिए, मैं भी हेल्प करने के लिए नहीं, और भी लोग आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए. सीखो ना. अगर आप छोटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उस चीजों के डर से अगर आपके माइंड पे ये है कि आप बिजनेस अपना इम्पैक्ट कर लोगे तो फिर आप एंटरप्रेन्योर ही नहीं हो. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको तो इन चीजों पे, जहां पे आपका सबसे पहले तो आपको माल बेचना है. बिजनेसमैन का काम क्या है? देखिए, जो भी एंटरप्रेन्योर बड़े बने हैं वो खाली इसीलिए बने, उनको बेचना आता है, बनाना सबको आता है. अब आप बना रहे हैं, आप बेचने का मॉड्यूल में आप ये डर रहे हैं कि जीएसटी का कंप्लायंस आएगा इसलिए मैं वहां पे कैसे जाऊं, तो मैं क्या करूं. तो वो माइंडसेट आपको चेंज करेगा. दिस इज नॉट अ, ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट प्रॉब्लम. ये पूरा माइंडसेट प्रॉब्लम. आप कॉस्ट एफर्ट नहीं कर सकते, आप सीख लो. देयर आर लॉट ऑफ चैनल लाइक दादा आल्सो सेड अबाउट सम अदर, वो आपको सिखा भी देंगे, लेकिन इससे आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप इम्पैक्ट नहीं कर सकते. Thank you. Very nicely put. What I picked up couple of lines from your talk is that it's true. The cost of non-compliance will be much higher than the cost of compliance. You need to spend a little bit of money, and if you can become compliant, then you can have a good night's sleep. That's very, very important. I think this is something that we must keep in mind. And the second thing is that if by becoming GST compliant, by doing registration in GST, filing return on time, and it helps you to get more business from all those online platform, why not? Because you can make money, only when you can sell. So your entire effort should be around how I sell. The second thing is that taking courage, taking risks, having courage and taking risks is what defines the entrepreneurs. If you call yourself an entrepreneur, please take that risk, have that courage. And these are laws, these are rules of the land, and we need to follow it. And hundreds of millions of people are following it.
you can also follow it. So there is no problem. It's not that tough. It is just that we have not traded into that path. Right. Believe me, it is not scary, Right. not draconian in any way. It's just that you have to start accepting. Once you start to accept this as a part of your business, once you start to accept this, okay, this is a part of the system. I know saying is easier, but then see, you have become entrepreneurs. Most of the people who will be listening to this video or seeing this video, you have become entrepreneurs. And what defines an entrepreneur is his ability to be very quick to learn, very quick to unlearn. Right. Right. So you will have to have that knack of unlearning the traditional ways of doing things, unlearning the traditional. We chartered accountants have moved from the Bhai Khata, Lal book. Now if you see my table, I'll show you, it doesn't have any paper. Absolutely no paper. We are going through a period of rigorous period where the audit deadlines are at the end of this month, and there's absolutely no paper. When I was doing chartered accountancy, we used to have calculators, red book. We used to add the figures on the calculator. Nowadays, there is absolutely nothing. Everything is. So things have changed. You will have to unlearn. We have moved from something and then learn. This is the today, this is the future, and this is not draconian, and take it forward from there. And believe me, it is not tough. By entrepreneurs, you have become entrepreneurs, so something in your blood is really pumping very fast, so you do not worry about these things at all. Right, right. Thank you, sir. And my last questions for today's session, because we want to keep it nice and short so that everybody, go through it, is about, this some of these things that we discuss about PAN, Uddam, Aadhaar, GST, etc. These are more or less, these are pervasive across, cutting across categories, cutting across your business. You need to have all of them. But there are certain businesses will require some additional things because of the nature of the business is like that. Okay, some of the businesses might require a pollution certificate, some of them might require fire licenses. Okay, and many of times I have seen, people run into middleman and all those things, without that hota nahi hai. Although government says, there are one stop solution, you come here, we'll do it. So obviously this is a very vast things, because it will depend on different categories. सबका अलग अलग नियम है, अलग अलग डिपार्टमेंट है. फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, is there any way we can approach it? Is there any nodal agencies, or is there any place where somebody can seek help while obtaining some of those certificates, etc., or those licenses, or at least the guidance how I can obtain some of them? See, there are, regarding licensing, normal PAN card, MSME registrations, which is the Udyam Aadhaar, and other things are okay. But there are some licenses which are specific to some of the businesses, like Right. pollution. I might not require pollution, you may require pollution, somebody else might not require, somebody else might require. And then there are various categories, green, orange, red category, depending on what kind of a pollutants you are releasing from your unit. See, there is again a small mindset problem in today's world that the agents will help you get it done. Nowadays, most of the things are online. You just have to go, apply, wait for your turn to come and visit it. थोड़ा सा वही खुद का नॉलेज की तरह. एजेंट्स मैं आपको बोलूं ना, एजेंट्स आपसे कम नॉलेजेबल है. वो खाली आपको ज्यादातर यही बोलेंगे, दादा टाका लागबे, पैसा लगेंगे. अभी जनरली क्या है ना, आज के दिन में एजेंट्स लोगों का काम ये हो गया कि अदर वे राउंड समझाना आपको कि दिस इज वेरी टफ, दिस विल नॉट हैपन इफ यू डोंट डू दिस. तो अपनार तो होबे ना, आप ऐसे करेंगे तभी होगा आपका. Right. So they try to make things a bit more tougher. And if you approach directly, there are various MSME platform है, MSME facilitation centers हैं, उनके थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हैं. Okay. इन जगह पे अगर आप अप्रोच करते हैं, जाते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि जितनी चीजें आपको समझाई जाती है कि इतना टफ है, शायद उतना टफ नहीं है. हाँ, एक चीज हो सकता है कि नॉर्मली आपको
सिंस यू आर न्यू इनटू इट, अगर कोई एजेंट आपको 5 दिन में करा देता है तो हो सकता है आपको 7 दिन लग जाए या 10 दिन लग जाए, ये चीज हो सकता है। बट आज के दिन में ये चीजें इस तरह की नहीं है। कोई भी चीज मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है कि यू रिक्वायर एन एजेंट। एक टाइम था पासपोर्ट के लिए भी लोग एजेंट से करते थे। अब आप ऑनलाइन में अप्लाई करो, यू गेट अ डेट एंड यू इमीडिएटली गो, नेक्स्ट डे यू गो, कुछ वैसा चीज ही नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं। हाँ, जब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा तो आपको कंसल्टेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, नॉट एजेंट्स। ऐसे कंसल्टेंट्स कैसे हैं? सपोज आपको फायर का लाइसेंस चाहिए तो कंसल्टेंट आपको बताएंगे कि फायर का लाइसेंस आप इस तरीके से अप्लाई करिए, आपका में ये रिक्वायरमेंट है, ये पूरा सेटअप आप करो, फिर आप फायर लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, ताकि वो जब इंस्पेक्शन में आए तो आपका पूरा चीज रेडी है। तो यू मे रिक्वायर कंसल्टेंट्स will guide you to ensure that your compliances as per the law are proper. But एजेंट्स के पास जाना या एजेंट से कराने वाला सिनेरियो आज के डेट में नहीं है। तो ये एक तो माइंड से हम लोग एजेंट के पास जाते हैं ये सोच के कि काम इजी हो जाएगा। पहले से हम लोग सोचते हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, बिना पैसा का काम नहीं होगा, बिना एजेंट को पकड़ के काम नहीं होगा। But at the same time, what you are saying is that things have changed. Now most of the things are available online. So go there and apply with all the credentials, and then wait for your turn. Maybe it might take little more, in terms of time, might take 2 more extra days. But in any case, you will get it. You'll get it. Now they everywhere, most of the places ना there is a turnaround time. Right. करेंगे इतने दिन में उनको आपको रिप्लाई करना है, so वो लोग भी प्रेशर में है। Right. जैसे तो वो चीजें, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कंसल्टेंट की दरकार होती है। जैसे मानो कि आपका एक्सपर्टाइज नहीं है फायर का, आपको वहां पे वो बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, कैसे क्या करना है, आपका हाइड्रेंट से चल जाएगा क्या, तो उन चीजों के लिए हो सकता है कहीं कहीं पे आपको कंसल्टेंट की दरकार पड़े। जहां कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट है वहां आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करके सेटअप करिए। राइट, जो डोमेन एक्सपर्ट होता है वो लोग आपको हेल्प करेंगे। राइट, थैंक यू सर, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी यूजफुल सेशन फॉर मी आल्सो। आई हैव आल्सो लर्न quite a few things and picked up quite a few lines which I can also use. I'm sure this session, this is a dry subject, as I have told many, including me. I also feel this is a dry subject, but these are very very important, cannot be ignored. And self learning is the best thing. And it's not difficult. It's all about mindset. You'll have to take little bit of risks. You'll have to have that courage, and that's why you are entrepreneur. So please watch this video. And if you have got further queries, further questions, please get back to us. We will definitely connect you with Sanjay sir. He will be ready to help you if you have got any specific questions. So on that note, I would like to thank Mr. Goyal, and thank you everyone for participating. It was wonderful talking to you, sir. Thank you. Thank you very much. Thanks for the opportunity. And I just like to conclude by wishing best to all the entrepreneurs. May you all succeed. May you all contribute to the growth of whichever place you are, whichever state you are, and of course our own country. So we look forward, and wherever possible, we would always like to come and contribute in whatever God has given us, some knowledge, some experience. We would always like to share. I think this is a responsibility on our part. So you can always bank on us. We'll come and share whatever we can always. Our best wishes. Thank you, sir. So nice of you. So nice of you. We really will count on that. Okay. Thank you. Thank you, everyone.